Hi and welcome to my channel. This is Interior Design 101 this side, your virtual design friend. We have discussed a lot about design aspects and theory part. Now let's see how can you improve your drawing skills. So let's get into the video. Do check our social media platforms to connect with us. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट लाइन से फेमिलियर हो। तो आज हम कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस देखेंगे टू इम्प्रूव योर डिज़ाइन स्किल्स। द फर्स्ट वन इज लाइन्स। स्टार्ट ड्रॉइंग वर्टिकल लाइन्स विदाउट एनी हेल्प ऑफ स्केल। ट्राई मेकिंग इट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। लाइन्स थोड़ी वैंकी होगी बट ओवर टाइम इट विल इम्प्रूव। अब नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस। मेक श्योर कि आप ना ही बहुत नियर बना रहे हो लाइंस नॉर वेरी फार ऑफ। वन टिप दैट एक्चुअली वर्क्स इज दैट आप आपके हैंड को ड्राइंग शीट का सपोर्ट दें। थर्ड लाइन इज डायगोनल लाइंस। First from one side and then we would go opposite to it. That would make it a crisscross line. We are done with lines. Now comes pattern. This pattern will help you to have control on your pencil and hand. The first one is circle. Make small circle next to one another. मेक श्योर कि आप पूरा सर्कल फॉर्म हो कंटिन्यूसली। योर सर्कल विल नॉट बी परफेक्ट इन वन गो, लेकिन एवरीथिंग टेक्स टाइम टू इम्प्रूव। पैटर्न 2, गो अप एंड डाउन विथ योर पेंसिल। मेक श्योर इट इज कंटिन्यूअस और आइदर जस्ट ब्रेक इट वंस। Around 8. Make round and stout 8. Spirals. Make round spirals and make sure it is not with a lot of distance. All these patterns will help you to improve your lines and sketches. These are just small exercises for your fingers to make them steady. Practice these patterns every day to improve your lines. It will hardly take 10 minutes to do it. This is it for today's class. See you in the next one. Until then, don't forget to like, share, comment and subscribe and hit that notification bell. Bye bye. Take care.